in to our live fan zones on our Facebook and YouTube channels. And not just that, you could also be the lucky one to win the ticket to stadium by tuning in to Radio Sports Flashes. So don't miss the ODIs and T20 coverage of India versus West Indies. Only on Sports Flashes, the global audio broadcast partner for Indian cricket. वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लैशेस टीवी। मैं हूं आपका होस्ट गौतम और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सौरभ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू गौतम। और आज फोर्थ ओडीआई है जो कि मुंबई में होने जा रहा है, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया। लेकिन उससे पहले फ्लैशबैक में चलते हैं, यानी कि थर्ड ओडीआई की अगर हम बात करें, जिस तरीके से इंडियन टीम की हार हुई है 43 रन से, और उस सबसे अच्छी बात यह है कि वर्ल्ड कप से पहले मिडिल ऑर्डर एक्सपोज हो गया है आपका। यानी कि आप फिर से देख सकते हैं जो इंग्लैंड में हो रहा था कि विराट कोहली, सिर्फ विराट कोहली के अलावा कोई भी नहीं चलता है। 107 रन विराट कोहली ने बनाए, काबिल तारीफ है। तो अब आपको लगता है कि विराट कोहली है जो टीम में, जो जिसका ट्रिगर आप दबाओगे तो विराट कोहली ही सिर्फ चल सकते हैं, उसके अलावा और कोई कुछ कर ही नहीं सकता है टीम में। इनफैक्ट विराट कोहली के अलावा जो टॉप ऑर्डर है हमारा, शिखर धवन, रोहित शर्मा, अगर आप टॉप ऑर्डर को आउट कर दो तो मिडिल ऑर्डर में वेट नहीं बचा है। अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, MS धोनी स्ट्रगल कर रहे हैं। नंबर 4 आपको मालूम नहीं है कौन है आपका, हार्दिक पांड्या टीम में है नहीं, तो मिडिल ऑर्डर पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है हमारा। और आपको बता दूं कि लास्ट एक साल में मिडिल ऑर्डर ने सिर्फ 2 50 लगाई हैं, सिर्फ 2 50 लगाई हैं, और सारा बल्क ऑफ स्कोरिंग कौन कर रहा है? हमारा टॉप ऑर्डर कर रहा है। तो हाई टाइम आ गया है कि भैया जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और जो भी उन्हें चांसेस मिल रहे हैं वो ढंग से उसे यूटिलाइज करें। और बहुत ही डेंजरस साइन है वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि 15 मैचेस रह गए, 16 मैचेस रह गए वर्ल्ड कप के लिए, और अभी भी हमारी सारी जो वेट है, जो पावर है बैटिंग का, वो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर पूरी तरह एक्सपोज। और अगर आप देखें, विराट कोहली ने 107 रन बनाए। अगर सोचिए विराट कोहली भी 50 या 60 रन बनाकर आउट हो जाते तो ये जीत कितनी बुरी, मतलब हार कितनी बुरी होती ना। अभी भी 43 रन से हम हारे हैं, क्योंकि आपने देखा है MS धोनी की बात करूं, 7 रन उन्होंने बनाए। हालांकि लगा था MS धोनी ने जैसे दिन की शुरुआत की थी, जितने एक्टिव वो नजर आ रहे थे, कि आज एक फिनिशर के रूप में MS धोनी नजर आएंगे। कुछ भी नहीं हो सका, मतलब एकदम बहुत डिसअपॉइंट किया। महेंद्र सिंह धोनी का इस साल जो स्ट्राइक रेट रहा है वो लोएस्ट रहा है पूरे करियर का। उनका 62 का स्ट्राइक रेट रहा है इस पूरे साल। बिल्कुल रन नहीं बन रहे हैं MS धोनी से, हॉरिबली आउट ऑफ टच लग रहे हैं वो, तो बहुत ही वरिंग साइन है। ऑब्वियसली वो T20 टीम से ड्रॉप हो चुके हैं, लेकिन पिछले मैच में भी जिस तरीके से वो आउट हो रहे हैं, जिस तरह से वो नच करना चाहते हैं, थर्ड मैन पे गाइड करना चाहते हैं, बार बार ऐसे वो डिसमिसल दे रहे हैं टीम को। स्पिनर्स के अगेंस्ट भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि इनकी स्ट्रेंथ हुआ करती थी। तो MS धोनी को यार ऑब्वियसली यार अपने ड्राइंग रूम में जाना पड़ेगा, और टीम इंडिया के लिए भी वरिंग साइन है, क्योंकि अगर MS धोनी वर्ल्ड कप स्क्वाड में जा रहे हैं तो बहुत ही क्रूशियल पोजीशन पे वो खेलते हैं, और वहां पर अगर एक ऐसा बैट्समैन खेल रहा है जो कि स्ट्रगल कर रहा है पूरी तरह, तो ये लिटरली टीम में होल हो जाएगा। ऑब्वियसली लेजेंडरी प्लेयर रहे हैं, एक्सपीरियंस ट्रेमेंडस है, और लेकिन एक टफ कॉल शायद लेना पड़े सिलेक्टर्स को। अगर MS धोनी आगे आने वाले वनडो में परफॉर्म ना कर पाए, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज है वहां परफॉर्म नहीं कर पाए, तो यू नेवर नो, क्या पता उन्हें वर्ल्ड कप से एक्स दे दिया जाए। और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था, ऋषभ पंत को आपने देखा था परफॉर्म करते हुए, 2 बार उन्होंने, एक बार भी नहीं 2 बार रन आउट करते हुए मतलब बचा लिया था विराट कोहली को जिस तरीके से, लेकिन ऋषभ पंत का कंट्रीब्यूशन कुछ अच्छा नजर ही नहीं आया। जब आपको मौका मिलता है कि आइए आप एज अ फिनिशर के रूप में आगे बढ़िए और दिखाइए अपना परफॉर्मेंस दमखम, फिर क्या फायदा हुआ? यानी कि आप विकेट कीपर के तौर पर तो ऋषभ पंत को लेकर आए नहीं हैं, और बैटिंग उनकी चल नहीं रही है, तो फिर क्या फायदा? एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं तो उनको रियलाइज करना पड़ेगा, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबली निभानी पड़ेगी। और ऑब्वियसली जिस तरीके से वो आउट हुए हैं सीरीज में, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। काफ़ी उम्मीदें थी कि भैया ओवल में जो 100 मारी थी टेस्ट मैचेस में, उसके अलावा भी एशिया कप में भी, एशिया कप में इनफैक्ट वो नहीं थे, लेकिन अभी जब भी मौके मिल रहे हैं, अभी वनडेज में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन डेफिनेट टैलेंट है। लेकिन उनको रियलाइज करना पड़ेगा कि एक एक मौका यहाँ पर गोल्ड डस्ट है, क्योंकि टीम से बाहर कौन कौन है? KL राहुल, केदार जाधव, मनीष पांडे, जो कि एक बैट्समैन है। ऋषभ पंत तो विकेट कीपर है, तो उनको ये मौका मिल रहा है एज अ बैट्समैन। तो टीम मैनेजमेंट कितना भरोसा दिखा रहा है उन पे कि भैया ये सिंगल हैंडेडली बैट्समैन भी खेल सकता है, एज अ विकेट कीपर नहीं, एज अ बैट्समैन। तो अगर वो वहां पर जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं अपनी प्लेस, तो फिर दिक्कत आएगी, लेकिन उनको टाइम दीजिए, ही विल कम गुड। बिल्कुल सही कहा आपने, और सुपर डुपर तरीके से उनको वापसी करनी पड़ेगी। वेल अभी टाइम है सुपर डुपर ऑफ द डे का, यानी बताना चाहूंगा हमारी एक्सपर्ट वेस्ट इंडीज टीम के फॉर्मर कैप्टन द लेजेंडरी कार्ल हूपर के साथ। तो आइए देखते हैं। Super Duper with Hooper.
Well, West Indies went one better than they did at Vizag. They dropped their leg spinner, Devendra Bishu, and they brought in Fabian Allen. This was a move, I think, that was long overdue. I said in previous reports that Bishu was probably not as effective as he should be in the middle phases of the game. So I thought this move was a good move, and then allowing people like Fabian Allen, who then bowled 10 overs, Marlon Samuels, who picked up 3 wickets in this game, and obviously they didn't use Rovman Powell, but he can also bowl. So I thought it was a very good move, and I think this had a lot to do with West Indies pushing towards victory. This is on the bowling front. On the batting front, again, Shai Hope, 95 not out, playing well, ably supported by Shimron Hettemaier, who scored 35 and then got out again to Yadav. But then you look at Nurse at the back end of the game, who obviously went on to get man of the match, coming in at a stage when I thought India might have thought, hey, we can get West Indies out for maybe 235, 240, playing a very good hand at the back end of the innings, scoring 40 off 20 balls, pushing West Indies then to 283, which I thought was a challenging score. India, on the other hand, when it was their turn to take strike, I always thought the difference between the two sides was Virat Kohli, only because the only 2 batsmen so far that came to the series and scored runs was Virat Kohli and Rohit Sharma. Yes, we had Rahadu scoring 50 odd, but we didn't see the lower half of the Indian batting lineup. We saw them last night, and to be honest, it looked a bit thin. A couple of bowling all-rounders would lengthen, would give balance to the Indian side, and this is what I felt myself watching the Indian unfold last night. Kohli is the difference between the West Indian side and the Indian side in this one-day series. He's now scored 3 consecutive hundreds against this West Indies attack, and he looks as if he's going to go on. He doesn't look like the sort of player that will give up this streak that he's on. We know we're going to look forward to the one-day game in Mumbai. I think India obviously will have to go back to the drawing board. I'm sure they're going to tinker with the batting lineup. Pant had a chance last night, didn't probably make good use of it. But again, it sets up the series for an enticing remaining 2 matches. I think West Indies have got a very, very good chance of winning in Mumbai, and if not drawing the series, at least not losing it. Watch the next episode of Super Duper only on Facebook page of Sports Flashes. और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने भी बोला कि कैसे वापसी की वेस्ट इंडीज़ की टीम ने, काबिल तारीफ दादा, जितनी भी तारीफ करो उतनी कम है। लेकिन विराट कोहली ने भी हथकंडे सारे अपना लिए। पहले आपने देखा था कि हाँ, बोला जाता था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम पहले ही खेलने उतरेगी तो हम अच्छा चेज़ करेंगे, लेकिन चेज़र के रूप में भी सामने नहीं आ सके हम। यार ऑब्वियसली विराट कोहली पे टू मच डिपेंडेंसी दिख रही है। विराट कोहली अगर चलेंगे, एंड तक मैच फिनिश करके आएंगे तो चांसेस बनेंगे, लेकिन जैसे ही विराट का विकेट गिरा पिछले वनडे में तो कोई चांस ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा था उन्हें दूसरे एंड से। और अगर थोड़ा सा एक पार्टनरशिप डेवलप हो जाती मिडिल ऑर्डर में तो शायद मैच हम जीत जाते। तो ये एक बार फिर से दोबारा हमें कहाँ लेके जाता है, हमारे मिडिल ऑर्डर पे। मिडिल ऑर्डर में नो वन इज परफॉर्मिंग। और आज मुंबई में मैच है, तो आपको क्या लगता है कि स्कोर कितना बड़ा होगा और क्या क्या करना चाहिए विराट? पिच कैसी है और हमारे फेवर में होगी या नहीं, कंडीशंस कैसी होंगी, क्या कहना चाहेंगे दादा? यार मुंबई में मैच है और सरप्राइजिंगली वानखेड़े में नहीं है मैच। सबको लग रहा होगा वानखेड़े में है, पर ये मैच है ब्रिबॉन में, सीसीआई ब्रिबॉन। और 2006 के बाद बाय द वे यहाँ पर एक वनडे मैच खेला जा रहा है। 2006 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल आखिरी मैच था ब्रिबॉन में जो हुआ था। छोटा मैदान है और बढ़िया पिच रहती है, जनरली रन बनते, रन फीस देखने को मिल सकता है। और ह्यूमिड कंडीशन है, क्योंकि सी के काफ़ी नज़दीक है स्टेडियम, तो ह्यूमिड कंडीशन काफ़ी रहेंगी, तो प्लेयर्स को उसका भी ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे वर्कलोड मैनेज करना है। अदरवाइज रन फीस है, फ्लैट बैक है और काफ़ी रन पड़ेंगे, सीसीआई में पड़ते भी काफ़ी रन। वेल दादा ने तो अपना प्रीव्यू दे दिया, लेकिन हमारे एक्सपर्ट भी हैं जो मैच प्रीव्यू देना चाहते हैं, तो हैं क्रिकेट एनालिस्ट चारू शर्मा और उनके साथ हैं ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स टीम की फॉर्मर कैप्टन लीजा। तो आइए देखते हैं। Well, the India-West Indies series is fantastically poised. After the first match,
we've been forgiven for thinking that India is going to run away with it. Then, of course, that magnificent tie in Vizag, and then the West Indies win. So it's 1-1, 2 matches still to go. I've got Lisa Sthalekar here with me. What is working for the West Indies and suddenly not working for India? The batting, isn't it? It's the young West Indian batsmen that have taken on the Indian bowlers. We've got Shimron Hetmeyer and Shai Hope that are kind of leading the way. Jason Holder is such a strong leader and he's bringing the best out of his players. Whereas from an Indian perspective, Virat Kohli is scoring runs. He's scoring plenty of runs, but they need someone else to go with him. The openers, India have lost their openers very early on in the piece, which means that Virat's coming in. And then that middle order of Rishabh Pant and MS Dhoni. They played some soft dismissals last night. So there are a few questions being asked about the Indian batting. Well, we could talk on and on about Virat Kohli, but then we'll have nobody else to talk about because he's in such spectacular form. But, you know, the one thing that India may be missing is that number 6-7 spot because, of course, Dhoni is considered a fabulous finisher, not being in the best form. That Pandya, a kind of all-rounder who can give them a medium-pace option and hopefully get some winning runs in the middle, or maybe Ravindra Jadeja, who hasn't quite worked out with the bat. So is that one area where India are possibly missing somebody to shore up their innings? Yeah, I think so. And I thought that India would win the series and then they'd give Manish Pandey a go. But I think now that, given their situation, the Windies are now confident. They're very strong in their group culture of what's going on and off the field. So India have got a tough series ahead. So maybe changes will be needed. I also think they need another option with their bowlers. They can't just keep going in one-day international cricket with 5 options because more often than not at international level, the bowlers are going to find it difficult because batsmen will play well. Yeah, of course, Bumrah's done very well for India and Bhuvi may be a little underdone for the moment, but maybe that is their better combination along with the spinners. But for the West Indies, McCoy seems to be a very good option. He's just either finding it tough on these kind of pitches or is he physically unwell, but he's a good prospect, do you think? I think all of the young fast bowlers of the West Indians have shown us that they can bowl quick. They're bowling at 140 kilometres an hour. It's their raw pace, but they lack consistency, and that's what you expect from young fast bowlers that haven't played a lot of one-day international cricket. I love his slower ball out the back of the hand. I think that's on Indian pitches is giving them some options and creating opportunities for them. So there are some really good signs for this West Indian side, remembering that they only just qualified for next year's World Cup. They just scraped through in Zimbabwe at the ICC qualifiers. But I think as a core group, they're building nicely and momentum is on their side. And the world will be happy to see that, just to get the West Indies back to where they were. And I can't resist it, so I'll say this one more time. Maybe they found the real McCoy. We'll find out. Well, 2 matches to go. Let's have a quick thought. You mentioned a Manish Pandey change. What about bowling changes? And how do you sum up the Indian possibilities in the next 2 matches? Or at least the next one in Mumbai? Well, I think they've got to bring in Manish Pandey. I think they've got to give themselves an opportunity to see how he goes at international level. I want to see more from the openers, Rohit Sharma and Shikhar Dhawan. From a bowling perspective, I think they've been going all right, but if they can have that 6 option, I think they'll be in a good stead going forward. So, playing at CCI, you'd like to think that they know the conditions well and that India will rectify the issues that we saw last night. But the Windies, they're looking good. Well, of course, the morale's very high too. Now, Marlon Samuels, for instance, has not been working out with the bat, which is a shame because he's such an experienced batsman. But with the ball yesterday, a bit of a hero. Do you see changes for the West Indies for this match? Of course, morale very high. I think they'll go unchanged. Why would you change a winning formula? Well, all right, Lisa, thanks so much. And just a quick, at this stage, a final result for the series. We got 1-1 for the moment, a tie, 2 to go. Maybe 2-2. Fantastic. अभी एक और ताज़ा खबर आई है, यानी कि इंडियन टीम ने यहाँ पर टॉस जीत लिया है और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। दादा, कितना अच्छा होगा ये फैसला? बिल्कुल, और टॉस जीत के पहले बैटिंग करके रन स्कोरबोर्ड पे आप टांगिए। और इंडिया ने 2 चेंजेस करे हैं, ऋषभ पंत और चहल बाहर हुए हैं, जो कि लॉजिकल था केदार जाधव का आना, और एंड रविंद्र जडेजा बाय द वे। 2 चेंजेस, जडेजा इज इन एंड केदार जाधव इज इन प्लेस ऑफ चहल एंड ऋषभ पंत, जो कि लॉजिकल लग भी रहा था क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे ऋषभ पंत इस पूरी सीरीज में अभी तक, और केदार जाधव अपनी बैटिंग तो लेके आएंगे ही साथ में, इसके अलावा बॉलिंग ऑप्शन भी लाते हैं।
उनका अजीब सा एक्शन है और उनके एक्शन को देख के जोड़ी ब्रेकर भी कहा जाता है। जोड़ी ब्रेकर कहा जाता है और काफी लोग उन्हें लफंगा बॉलर भी कहते हैं, बच्चे तो स्पेशली लफंगा बॉलर कहते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा ये दोनों चेंजेस, लेकिन लॉजिकल चेंजेस हैं। और बॉलर से याद आया कि बुमराह की परफॉर्मेंस बुमराह की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी लास्ट मैच में, 4 विकेट उन्होंने लिए थे, लेकिन भुवी का मैजिक वहां पर नहीं देखने को मिला था। वहीं हमारे एक्सपर्ट लीजा ने भी ये बोला है कि वेस्ट इंडीज की बॉलिंग में वो धार आपको देखने को मिल रही थी। फास्ट बॉलर्स कितने अच्छे हैं, 140 के ऊपर जो फेंकते हैं, तो दादा आज क्या होगा। बिल्कुल यार, क्वालिटी बॉलर्स हैं वेस्ट इंडीज के पास, अभी भी ब्लेस्ड हैं वो। एक ज़माना हुआ करता था उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हुआ करते थे, द ग्रेट कॉर्टरेट जो था, उसके बाद 90s में कर्टली एम्ब्रोज एंड कॉटली वॉल्श, मोवन डिलन, तो हमेशा ये ब्लेस्ड रहे हैं पेस के साथ। बिल्कुल। और अभी कीमार रोच हैं और उसके पहले गैब्रियल भी बड़े शुरुआत टेस्ट मैच में काफ़ी पेस जनरेट कर रहे थे वो, तो इस मामले में वो ब्लेस्ड हैं और अच्छी बॉलिंग करी अभी तक सीरीज में। अगर दोनों टीम को कंपेयर किया जाए तो उनके पेसर ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, हम लोगों ने पुअर बॉलिंग करी है। भुवी वॉज वेवर्ड और बुमराह के अलावा अभी तक बुमराह ने जो एक मैच में ना अमेजिंग बॉलिंग करी, स्किल दिखाई, यॉर्कर्स उनको अच्छी डाली और लेंथ भी अच्छी वेरी करी। तो अब हाई टाइम है कि आज स्पेशली सबसे इंपॉर्टेंट तो है मिनिमम 300 रन ऑन द बोर्ड्स, उसके अलावा आपको ऐड ही करने पड़ेंगे उस पर, क्योंकि छोटा स्टेडियम है ये। और फिर ओनस किस पे आता है? बॉलर्स पे, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स। क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा है, भुवी भी वहां पर स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। जिस तरीके से बुमराह ही सिर्फ चले थे, और बैटिंग तो करना बनता है बॉस, यानी कि बैटिंग में भी आपको कमाल दिखाना पड़ेगा। आपके बॉलर्स कितना भी अच्छा परफॉर्म कर ले, लेकिन अगर आपके बैट्समैन सही परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वहीं आपको देखने को मिला वेस्ट इंडीज की टीम से जेसन होल्डर भी चल गए और स्टार्टिंग तो काफ़ी अच्छी हो ही रही थी, तो काफ़ी गहराई वाली बात है। ये गहराई से याद आया कि हमारे एक्सपर्ट दीप दास गुप्ता डीप एनालिसिस में क्या कहना चाहते हैं, आइए। Welcome to Deep Analysis on Sports Flashes. Well, as I promised, this was going to be a comparative, and look where we are after 3 games. All 3 possibilities are right there in front of you. India won 1, there was a tie, and India lost 1. But here we are after 3 games. It's 1-1, and 4th and 5th ODIs will also be very competitive, is what I think. Well, for the 4th ODI at Brabant Stadium, the venue has always been a high-scoring game because it's an amazing pitch to bat on. I've played on this pitch, and the ball comes onto the bat. You can play all your strokes. There is bounce, so obviously your back foot strokes come into the picture as well. It's a smallish ground with a fast outfield. Dream place for the batsman, and I presume it's going to be the same way for the 4th ODI as well. लेकिन आगे बढ़ते हुए 2 चीजें जो मुझे लगी पिछले मैच से बेहतर करने की जरूरत है। सबसे पहले एक चीज जो निकल के उभर के बाहर निकला है, वो है 5 बॉलर से जब भारत खेली है, तो ऐसा तो होता ही रहता है कि कोई ना कोई गेंदबाज को पड़ती है मार, फिर आपके पास अगर छठा बॉलिंग विकल्प ना हो तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो वहां पे मेरा मानना है कि एक दिवसीय क्रिकेट हो या T20 लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में एक छठा विकल्प होना बहुत जरूरी है। और पिछले अगर तीनों मैच में देखें तो पहले 2 मैच में 350 रन करीब बने हैं, तीसरे मैच में भी 280 जैसे तैसे हो, लेकिन 280 से ज्यादा बने हैं। तो वहां पे गेंदबाजी का मुझे लगता है एक दिमाग में रखना पड़ेगा छठा बॉलिंग विकल्प। दूसरी तरफ बल्लेबाजी की अगर हम रुख करें, छठा बॉलिंग विकल्प जरूर हो, लेकिन जो बल्लेबाजी है वहां पे उसके साथ यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। सो एज फार एज द बैटिंग लाइनअप इज कंसर्न, यू कैनॉट कॉम्प्रोमाइज। एंड आई ऑल्सो थिंक स्पेशली इन द मिडिल ऑर्डर विद धोनी नॉट बीइंग इन ग्रेट फॉर्म, you need some more experience there to finish off games. If the top 3 has been doing the bulk of scoring, but that would also mean that the middle order, 1, does not get too many opportunities. Secondly, it's not been really tested. So that's the reason we've been struggling to a great extent. And in this series, well, the top order in the last game kind of did not fire apart from Virat, and here we are. So, to keep these 2 together and put it together, I think Kedar Jadhav, who's part of the squad now and is available for selection, I think should come in. Now the big question is, in place of whom? किसकी जगह केदार जाधव खेलेंगे? तो देखिए, मेरा ये मानना है कि 2 विकेट कीपर खिलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। आपने ऋषभ पंत और धोनी दोनों को साथ में खिला के दिखाया, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद ऋषभ जो है उसको थोड़ा रेस्ट दिया जाए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि ही हैज नॉट परफॉर्म्ड ड्रॉप वगैरह, लेकिन मेरा मानना है कि 2 कीपर की जगह आप ऋषभ को थोड़ा रेस्ट कराएं और उनकी जगह केदार जाधव को लेके आए।
तो थोड़ी सी वो एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। We've seen what Kedar has done in the last year and a half, coming and batting at number 6-7. So Kedar Jadhav there, and he fills up the gap of the sixth bowling option as well. As far as Indian batting is concerned, well, got to be careful. What West Indies did in the third game was, as I mentioned before, in the review of the third game, they had their fielders really tight and stopping those singles and forcing India to play those shots which, as I mentioned, they were not natural to them, or those big shots which were not really required. तो वहीं पे मैं ये चाहूँगा कि अब अगर केदार भी आ जाता है, थोड़ा एक्सपीरियंस के साथ खेले, थोड़ा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेले, क्योंकि अब ये मामला जो शुरू में लग रहा था कि एक तरफा हो सकता है, वैसा नहीं है, एक पे बराबरी पर है, मजा आएगा आगे। Well, that was Deep Analysis, but the next episode of Deep Analysis would be exclusively on Sports Flash's Facebook page. और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने कहा वही हुआ यहाँ पर ऋषभ पंत को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह पर खेल रहे हैं केदार जाधव। कितना कमाल आज आपको देखने को मिलेगा केदार जाधव के आने से। फिर से नंबर पर वो खेलते हैं, कुछ तो आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऋषभ पंत अपनी बैटिंग की दम पर टीम में जगह बना रहे हैं, जो थोड़ा सरप्राइजिंग है। थोड़ा सरप्राइजिंग करियर नया हुआ है, आउट एंड आउट टैलेंट है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, पर अभी भी उससे बेटर ऑप्शन है मिडिल ऑर्डर के लिए हमारे। थोड़ा वेट करना पड़ेगा। केदार जाधव इज एनी बेटर ऑप्शन, तो क्योंकि वो बैटिंग भी करते हैं, एक्सप्लोसिव भी हैं, डायनामो है, पॉकेट साइड डायनामो है, बॉलिंग भी लेके, इसके अलावा बॉलिंग भी लेके आए हैं अपने, और उनका एक्शन करना आसान है, उन्हें पिक करना आसान भी लाएंगे, तो बॉलिंग भी लाएंगे, बैटिंग भी लेके आएंगे, तो ये अच्छा मूव पैनिक वाला ही मूड बना है। टीम में देखो केदार जाधव टीम में नहीं जाएगा, 2 वनडे उनको लाएगा, केदार जाधव परफॉर्म करे, पेश करे, अपनी दावेदारी पेश करे मिडिल ऑर्डर के लिए फॉर द वर्ल्ड कप। वो छोटा पैकेट बड़ा समाते आप उन्हें बोल सकते हैं। ये बात भी अच्छी निकल कर आई कि ऋषभ पंत को यहाँ पर ड्रॉप किया है, क्योंकि 2 विकेट कीपर खिलाने का कोई मतलब बनता नहीं है। पहले से खेल रहे हैं और ऋषभ पंत कुछ अच्छा कर नहीं पा रहे, तो अच्छा फैसला था मेरे हिसाब से। लेकिन MS धोनी बैटिंग कर रहे हैं, 2 डे के वनडे में भी वो अपनी जगह बना लेंगे। लोगों को हार्श लगेगा, लेकिन MS धोनी को अपना गेम भैया बात कर चुके इस बारे में, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर बहुत ही बेटर लग रहा है, बहुत ही अगर वो इम्प्रूव नहीं हुआ तो इंडिया विल कंटिन्यू। तो आप डिपेंडेंट हो विराट कोहली पे, रोहित शर्मा पे, शिखर धवन पे, अगर ये ड्रॉप हुए, बिल्कुल सही कहा आपने, भाग्य साथ नहीं दे रहा है यहाँ पर ऋषभ पंत से। भाग्य से याद आया, आप हमारे लकी विनर्स बन सकते हैं। सर आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, और अगर आपको जवाब मालूम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है स्टेडियम में मैच देखने की। तो सवाल क्या है? बिल्कुल डेफिनेटली मिल सकती है। और क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, अगर उसने आप दिया, उसका सही जवाब दिया तो वनडेज में और T20 में जो रहेगा, T20 में आपको मैच देखने का मौका मिलेगा फ्रॉम द जरूर डालना चाहूंगा। मैं ये पूछना चाहूंगा सवाल है क्या? क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्रिकेट स्पेशली फॉर द क्रिकेट, हाउ मेनी बैट्समैन इन इंटरनेशनल सर्किट हैव स्कोर्ड डबल 100 इन वनडे क्रिकेट? क्वेश्चन है कितने लोगों ने दोहरे शतक लगाए हैं वनडे क्रिकेट? क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन आगे कमेंट कीजिए, फेसबुक पे जाके कमेंट कीजिए, पे जाके और वेबसाइट पे जाके यू कैन शेयर योर आंसर। और बिल्कुल अगर आपको जवाब मालूम है तो आप हमारे ऑफिशियल पेज पे भी जा सकते हैं, इसके ऑफिशियल पेज पे जाइए और वहां पर जवाब दीजिए, क्योंकि मौका गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वेल फेस ऑफ इंडिया के वेस्ट इंडीज और इंडिया के बताना चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट यानी कि रिकार्डो पावर के साथ सोडी ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। As the West Indies tours India, it's time for cricket action and excitement with a dash of entertainment. Sports Flashes brings to you the India versus West Indies ODIs and T20 matches. Exciting previews and reviews by star cricketers and commentators. In-depth match analysis, live scores, top with the most entertaining shows.
Check in to our live fan zones on our Facebook and YouTube channels. And not just that, you could also be the lucky one to win the ticket to stadium by tuning in to Radio Sports Flashes. So don't miss the ODIs and T20 coverage of India versus West Indies. Only on Sports Flashes, the global audio broadcast partner for Indian cricket. Okay, so I'm smiling. We all know why. West Indies won the last ODI in Pune. We saw it coming from a mile. In Vizag, we batted well all the way to the end where we came through with a tie, but we know this was eventually going to happen. India at some stage was going to break, and West Indies batted excellently in the last ODI in Pune, and we bowled it even better. India is in serious trouble for the rest of the season. Oh my God. This is something coming from Ricardo Powell is unbelievable. One bad day in the office doesn't make any team bad. And West Indies has all the bad days if you talk about since the time they have landed in India. Bad when we talk about Test cricket, bad when we talk about the first ODI in Guwahati. They were better in Visakhapatnam, but still they had lots of problems. And Indian team didn't play well in Pune. Agreed, but that is one of the days. Again, Virat Kohli, you don't have any answer to Virat Kohli's magic. Your bowling is struggling. Hope, he looks organized. But again, he's somebody on whom you can't rely many hopes because at times he doesn't win you games. What happened in Visakhapatnam? So I'm sure, Ricardo, you can smile, but this smile will not last for many days. Rather, you will not be smiling after 2 days or rather tomorrow. Saudi, let's think about it. The only batsman who really stood out for India was Virat Kohli. He continues to be the only outstanding batsman for India. What West Indies have in our batting, the firepower that we have after number 5, number 6, India don't have. Chahal, Kuldeep, all these other low order batsmen, India is struggling. And I guarantee you, the next two ODIs, West Indies is going to win convincingly. This is called the height of overconfidence which my friend Ricardo Powell has. I respect him. He's saying that West Indies, they're going to win convincingly. The next ODIs, I think it is very far off because the convincing win is something which might not come. It can be a convincing loss, and we are preparing for a big Australia tour. We don't want to waste our energy. And I'm sure Virat Kohli, another 50, 60, 70 in the next ODI, and India is going to win. Let's talk about India bowling. You made changes to come in which you claim that India best attack played in the last ODI. We still managed to score 280 plus runs. Remember that. West Indies made changes in their bowling department where they brought in Fabian Allen, the left arm spin bowler, which is a good variation for the West Indies team in the middle. He's an excellent fielder. He's like a live wire in the field, which made a big difference. Hope continues to bat well. Hetmeyer still continues to bat well. You have Jason Holder at the end who is batting well. So overall, West Indies is getting their batting together. The bowling unit is now coming together, and India continues to struggle in their middle order in terms of their batting. Their bowling might not be enough to bowl West Indies out, whether we're chasing or we're setting a total. Goodness gracious, I don't understand how you define continuous struggle. India is not struggling at all. And when you talk about bowling, you were not able to reach even 240 runs. Just a few bad overs by Bhuvneshwar Kumar. Last over went for 21 runs, and that really turned the tide. But if we talk about the whole scenario, West Indies are struggling. They're struggling big time. What can I say? I will leave you to what you believe, but I will go by the result of the last game and how well West Indies played. We batted well all the way to the end, and we bowled well, and we won convincingly. For India to beat West Indies, the batting unit have to come together outside of Kohli, and the bowling unit have to be able to bowl West Indies out under 300 runs. I'll leave my case at that. And I will also end my case saying only one thing. Mr. Ricardo Powell, and this will be translated to you in Hindi or Punjabi. Ikki dukki chak damange, lod pai ta West Indies nu, sare ODIs vich tak damange. Chalo.
देवांगे कि चक देवांगे वेस्ट लोड में वेस्ट इंडीज नो क्या शानदार यहाँ पर बोला है नितिंदर सिंह सोडी ने रिप्लाई, लेकिन उसका रिप्लाई उसने किया है यहाँ पर शाहरुख पवन ने चलो हमारे जाने का टाइम हो गया है। आप बने रहिए और सुनते रहिए इसके लिए, अपडेट्स के लिए रेडियो स्पोर्ट्स रेडियो चैनल।